बहुत इंग्लिश से जो 3 क्वेश्चंस पढ़ा है हैला क्या 3 क्वेश्चंस पढ़ा था मैं अपने मार्केट कंटिन्यूअस आपका तुम्हें कौन क्वेश्चन आंसर लेके और खास ये मार्क कर आप से मोरालिटी पाई पढ़ा होछि ला तुमे शिखिबो after 20 years William Sidney Porter known by his name O. Henry was an American writer. His short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization, and surprise. So, O. Henry, undoubtedly, he was like a social reformer. He was analyst. So, like O. Henry, closely he observed the society, the mentality of the people, and the activities of the people. So at last, he understood that in this modern society, there are different like what type of people are there. Their nature, character, ideology, beliefs, thoughts, completely it varies from person to person. So that is why O. Henry, he understood that due to lack of education, due to lack of proper communication, and due to lack of moral knowledge, the people, those who are living in the society, they do not have kind of humanity, sincerity, and like kind of emotional attachment. So that is why at last O. Henry's conscience knocked him to write down certain stories, prose, poetry, so that by writing prose, stories, so he will be bringing kind of like a great change in the society. Hala, mane O. Henry चाहिले ए लेखि करी किछि नुआ नुआ जिंस लेखिया देखिबो मु पढि सारला परे तुमे क्लास गुडा को भलरे सुनिबो सुनिले तार मोरल गुडा को जानि जे काहे के गुडा को पढा ओ हेनरी देखिले हमरो ए जो ह्यूमन सोसाइटी रे लोक मानक भितरे डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट थॉट्स एसो अछि जो थिबे हमरो सोसाइटी डेवलप करि पारो ना ओ हेने कोन करछ डू यू वैल्यू पर्सनल रिलेशनशिप व्हाट विल यू प्रेफर ए पर्सनल रिलेशनशिप come in the way of your duty. So now O. Henry has highlighted the application and the value of the personal relationship and the value of the duty. So now let us analyze what is personal relationship and what is duty. Suppose for example, like in your college, when the lecturers they are teaching, they are taking the classes, so that is their duty. Taking 45 minutes class, that is their moral duty. And the personal relationship means, suppose for example, when somebody is chatting, discussing, interacting, so kind of interaction. So O. Henry has suggested that the personal relationship and the like what kind of duty, they are completely different. They have got different position and different status as well. And that has to be identified, cultivated among the children and in the society. O. Henry कहले जे हमर मनुष्य समाज रे गोटे ड्यूटी अछि आ गोटे पर्सनल रिलेशनशिप अछि ड्यूटी हला हमर जोटा कर्तव्य पर्सनल रिलेशनशिप अछि सेटा होछि निजर जहा किछि संपर्क हाँ व्यक्तिगत माने कर मु वर्तमान तुमको पढाउछि
एटा इट इज माय ड्यूटी तुमको 3टा रु 4टा आई विल बी टीचिंग सो दिस इज माय ड्यूटी but personal relationship means suppose for example some of my close relatives some of the guests they have come and they are waiting outside so they'll be calling in the middle of the class and I'll be going and interacting in the middle of the class which should not be permitted माने एठी माने कर मु तुमको जो पढाइबी 3टा रु 4टा पढाइबाटा होची मोर ड्यूटी जदी के इन द मीन टाइम के डाकिला 5 मिनिट 2 मिनिट जाई पारे बट इट्स नॉट दैट आई विल बी गोइंग outside and I'll be talking for half an hour. Say it as a personal relationship. So O. Henry has suggested in our society the personal relationship and duty they coincide, they collapse, they collide, they have got a kind of cultural disruption. तेणु लोक कौन करती न जानी आउट ऑफ इग्नोरेंस जानी न पारिक पर्सनल रिलेशनशिप और ड्यूटी की मिक्स कर दियंती जो समस्त प्रॉब्लम माने करो एठी तुम्हारा क्लास चले तुम्हारा बर्तमान ड्यूटी व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू हैव टू लिसन इट तुमे कोन करिवो एटा माने करो न सुने के मोबाइल संग संगे गपिबो दैट इज फॉर लेट अस से 10 20 मिनट्स सो दैट इज द पर्सनल रिलेशनशिप सो व्हाइल इन ड्यूटी द पर्सनल रिलेशनशिप शुड नॉट ट्रियम्फ द मैटर माने पर्सनल रिलेशनशिप समय रे ड्यूटी रहिबा कथा नहीं ड्यूटी रहिबा समय रे पर्सनल रिलेशनशिप रहिबा कथा बट at times if the situation compels if the circumstance forces one has to balance the personal relationship and the duty माने करो जने मोर फ्रेंड डाकिले मु तांको पाखु जाई 2 मिनिट गपी पळे आसे दैट इज ऑल राइट but it's not that I'll be going outside and I'll be talking 20 minutes 30 minutes so which should not be permitted so on that basis how the problems are erupted in our day to day life that has been explained by O. Henry. O. Henry narrate the story to show devotion to duty triumphs over personal relationship so O. Henry understood that everybody in the world irrespective of caste, creed, religion, gender, everybody should have kind of devotion, sublimation, inclination, concentration towards respective duty. O. Henry कहउछंती जहार जहा ड्यूटी अच्छी समस्ते मन ध्यान देकरी one should stick to that जी स्टिक न करिवो लाइफ रे से अनसक्सेसफुल रहइबो प्रॉब्लम क्रिएट हबो तो O. Henry कहउछंती द ड्यूटी ट्रियम्स द पर्सनल रिलेशनशिप जे कर्म को ठीक भाव रे करिवो ताल से पर्सनल रिलेशनशिप को पछरे पकई दो द स्टोरी depicts the irony and the pathos of life in a subtle and dramatic manner read the following unit of the text and note how two friends meet after 20 years at the appointed time and place. So in this particular chapter, we are going to learn after 20 years, two friends, how like they met on appointed day and appointed time. एठी O. Henry दी जन बंधु बा दी जन सांग 20 वर्ष परे अपॉइंटेड टाइम एंड डेट माने 20 वर्ष पूर्व से माने डिसाइड करथिले को दिन केते बेले दे विल बी मीटिंग ईच अदर एंड दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय O. Henry. The policeman on the beat moved up the quiet road smartly. His smartness was habitual and not for show, for spectators were few. So once, like what happened? Once one policeman, he was being assigned certain duty. And that was like the time was 10 o'clock night. Honestly, religiously and very piously, he was performing his duty with lot of concentration and devotion, even the spectators were few. Mane
एठी कहउचंती के ओ हेनरी से जो पुलिस मैन दिने कोन हले तांको गोटे ड्यूटी दिया हेतला से ड्यूटी समय रे रास्ता रे केही नाहंती रात्रि समय ठंडा समय केही नाहंती बट स्टिल the policeman was performing his duty honestly and sincerely and religiously and judiciously माने जेतेबेले रास्ता रे केही नथांती माने पर हमर एबे सब जो पुलिस हैला रास्ता रे जदी केही नथिबे लोक केही नथिबे ठंडा होथिबो पुलिस माने कोन करबे प्रैक्टिकल कथा केतेक जाई चा पीबे सिगरेट केतेक घर पळे कहे तो लोक कहीं नहांती आमे घर पळे हमर जो कली जुगर जो पुलिस सब अछि हला किंतु सत्य ना आउ किछि एमती ड्यूटी रे बसतबे एमती भी थिबे किंतु ए जो पुलिस मैन he was very honest religious judicious and over sincere तेणु एई पॉइंट रु तुमे गोटे जिंस सिखला देखो एथु बहुत जिंस सिखबार अछि इन आवर रिस्पेक्टिव लाइफ एवरीबॉडी should be concentrating on their respective work religiously and judiciously एई चैप्टर आमे सिखले समस्त आमे लाइफ रे हमर जो ड्यूटी की आमे फुल डिवोशन सहित आत्मार सहित से ड्यूटीटा करिबा उचित लोक थांतु न थांतु keeping in the mind somebody there somebody माने के सत्य पर आना के ना के गार्ड हला सेही जो मेंटालिटी रखिले one will be honestly performing his or her duty but the locality was one that kept early hours and chilly winds and the drizzle had almost de-peopled the streets and on that particular day the locality was being de-peopled by the street माने de-people माने सेही दिन एते ठंडा होथाय राति 10टा समय विंटर सीजन de-people माने रास्ता रे केही लोक नथे तेणु पूरा काम एंड क्वाइट थिला तो सेही समय रे the policeman he was such an honest person he was attending his duty honestly एटा काहे की पढाला तुम मानु को एटा कहला जे तुमे माने लाइफ रे every point of life रे you have to be honest and you try to be honest से जो honesty ता दिने ना दिने तुम कोन करिवो गोटे बेटर पोजीशन रे पहुंचे हला पचारिबो कि मैं अंशमान को ना आसीबो बरोबर examining closed doors as he went making various interesting and playful movements with a small stick the officer with his stalwart figure and smart movements made a fine picture of the guardian of the law so the policeman when he was on duty he was like checking each and every door closed or not in the town and making like what various joyful playful movements because being a policeman it is his moral responsibility to see the crime scenes crime files any kind of mischievous activity during his duty time माने पुलिस मानकर दायित्व होची तांको ड्यूटी समय रे के किछि चोरी करूची के किछि माने कोन मिस्चिवियस एक्टिविटी रे दे आर इन्वॉल्व so that particular policeman he was such an honest man not only he was honest but also he was extra serious so that is why O Henry has explained this is the like what religious nature God has blessed him with a beautiful character, with a tremendous like kind of religious nature, judicious nature, and he has such an honest man. Because even though the like entire street was de-people, it was calm and quiet. The spectators were few, but still then his honesty was still in continuing mode. एठी ओ हेनरी कहउचंती
जे सेई दिन राति रे कोनोसी लोक नथिले सुनसान थिला क्लाइमेट ता सहित राति स्पेक्टाटर्स माने बाहरे केही देखिबा को नाहंती ता माने एई समय जनरली लोक माने कोन करंती के ढोळी पड़ंती के सोई पड़ंती के गोटे जैकेट ठीक पळेबो कोठी किंतु एई जो पुलिसमैन ही वाज एक्स्ट्रा ऑनेस्ट सिंसियर एंड वेरी रिलीजियस मैन माने एउठु तुमको सिखला को मिला even if when you will be on your respective duties you will have to follow the religiously judiciously because keeping in the mind somebody there some supernatural power is there who is observing us तो एठी ओ हेनरी कहउचंती एई जो नेचर ता रहिची ए नेचर ता ही दिने ना दिने तुमको गोटे डेवलपमेंटल स्टेज नै करी गोटे बेटर पोजीशन रे पहुंचे दे परियो and like he was having smart movement and achieve the guardian of the law because all the police officers they are being trained by CRPC and IPC. Whatever the rules and regulations are enacted by Criminal Procedure Code and Indian Penal Code, all the police officers have already been trained by their authority. एटी कह जाउची जो पुलिस मान को माने कर आमे एठी जो पुलिस सब देखते रास्ता रे तुमे गला बेले एठी जन जन कर गोटे स्टार थाए जन जन दुईटा स्टार थाए जन जन तीनटा स्टार थाए ऐसे जन जन कर छोटिया छोटिया स्टार थो एडी के इच्छा समान होचिन आईपीएस so all the police officers according to their position power they have been trained about the rules and regulations so similarly in this particular chapter the policeman who was on duty he was extra religious extra judicious and that too he himself was thinking he will not be violating the rules otherwise somebody there he might get kind of punishment from Almighty बुझिलो तेणु सेई पुलिसमैन मनरे थिला जदि से तांको ड्यूटी का ऑनेस्टली न करिवे बट सुपरनेचुरल पावर somebody there will be punishing us तेणु तुमे एठी सिखिला किछि ना सिखिलानी सिखिला कोन सिखिला तुम्हारे जो क्लास 2 रे ए जो काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन तुम्हारे चैप्टर ए क्वेश्चंस रे बहुत जिंस सिखबार अछि नहीं बहुत जिंस सिखबार अछि काने हम काली बड़े जरे 3 क्वेश्चंस पढ़े के आसली डिस्कशन करथली 3 क्वेश्चंस रु फर्स्ट हला हाउ द लाइक पर्सन शुड स्टार्ट देयर रिस्पेक्टिव वर्क and who is the right person to consult and what is the right occupation and one should choose तो एठू तुमे सिखिला even if when you have been assigned kind of responsible work kind of duty you have to try your level best to perform it honestly जे थाउ न थाउ तुमे सब बेले भाबिबो मोर जहा करूची भगवान मते देखुछन so that your nature character will be inclined towards religious life hela next he could see a few lights coming from a cigar store an all night hotel and one or two tailoring shops completing the day's work so what that policeman observed the policeman observed from some different stores like what cigar lights are coming and that too like some tailoring works are about to close माने जेहेतु तांकर से टाउन ऊपर तांकर ड्यूटी थिला से पुलिसमैन कोन कले ना से देखिले कोठ गोटे सिगारेट धुआं आसुची केना धुआं जते बेले आसे गोटे पुलिस ताको सस्पेक्ट करन संदेह करी तापर आ गोटे जगह रो गोटे टेलर कोन करथंती तांको दुकान बंद करबा को जाउचंती so the moment he observed these two incidents he started working very speedily to do his honest duty the majority of the houses were business places that had long since been closed now and then he would suddenly turn about and cast his watchful eye along the peaceful road so like on that particular night almost all the shops were being closed
honest and sincere, and his acute sincerity had made him extra stalwart, and the personality became extra serious. एठी narrator ओ हेनरी कहउचंती जे तांको भितरे एते गोटे भलो ऑनेस्ट कैरेक्टर थिला तांको पर्सनालिटी को डेवलप करते माने कर तुम भितरे किछि पिला थबे माने बहुत हार्ड वर्किंग बहुत ऑनेस्ट बहुत ट्रूथफुल so that is your personality. So O Henry has suggested in this modern society if everybody will be inclined towards kind of honesty, so definitely sooner or later that honesty will be paying you back. आमे जदि से ऑनेस्टी को मेंटेन करिबा दिने ना दिने तार रिजल्ट आमे पाइबा. Now and then he would certainly turn about and cast his watchful eye along the peaceful road. You are thinking of what his boss had said in the morning. Pale face, square jaws, deep and dark eyes, and a little white scar near the right eyebrow. Actually, his boss on that day morning had told him a person should be looked into, person having the identity or identification mark, pale face, square jaws, deep and dark eyes, and little white scar. That kind of person should be outright red-handed, located and detected on that particular night. तांको बॉस जे मा तांको ऊपर ऑफिसर कहिथिले जे जणे लोक मळीन पड़ी जाइथिबा मुह स्क्वायर ज ए जो दांत गुडा को स्क्वायर साइज हेतिबो काहे कि हमरो कहारो आउ किछि साइड थाय कि दांत गुडा को एठे ओ हेने लेखछन स्क्वायर साइज हमर आउ कार अलगा साइज हे जाय था कि ना समस्त स्क्वायर साइज कोना नहीं अलग साइज कार अच्छी सुना ताहले मु कहि दो बहुत माने पिला थांते तांको दांतरे ब्रशटा यूनिफॉर्मली मूव करबनी हला गोटे भितर को गोटे बाहर गोटे तेढ़ा आइतबो गोटे आडू आस्तबो एमति अछि सेटा स्क्वायर जरे जीवन आउ केते जण थांते 24 आवर हसुथे सेमतिया जो किछि थिबो 24 आवर हसिथिबा जो केतना के कहला दो जो है के कहला नहीं सेटा ये झियर होची नेचुरल ला नेचुरल स्माइल आउ भगवान एमिति का प्रकार जो देखंती से नेचुरल स्माइल नकले मध्य नेचुरल जो थाए कौन से टीथी हां दांतुरी दांतुरी जे हां हां माने पार्टी ऊपर से चली आस्ता है as a part of police organization he felt a little ashamed that the name of this notorious criminal was still unknown and that he was still at large. So that policeman who was on duty, his boss has already ordered him to locate a notorious criminal on that particular town which very much most wanted, very acute condition was. माने तांकर बड़ पुलिस ऑफिसर कहिथिले एई भली लोक से होचन गोटे बड़ क्रिमिनल तांकु तुमे जेमिति तांकर आइडेंटिटी तांकर लोकेशन खोजिकरी बाहर करो. Printing counterfeit notes was a serious affair he knew and the criminal must be caught. So the policeman's boss ए बॉस र स्पेलिंग होची BOSS आ गोटे अछि BUS ए बॉस हला तांकर हाईएस्ट अथॉरिटी बा हाईएस्ट ऑफिसर. सो ही बॉस हैड ऑर्डर्ड द पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इन काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी व्हाट क्राइम ही हैज कमिटेड द क्राइम इज ही वाज काउंटरफिटिंग द नोट्स से कोन करथिले डुप्लीकेट टंका छापुथिले तण तांको ऑफिसर कहिसंती से लोक को धरिगिरी आना
he took out his pocketbook under a lamppost and looked at the $5 note and reconstructed photograph. So like what he did, like the policeman took out that note from his pocket. He saw that counterfeited note, and that too the photograph of the criminal notorious man. से जो दुष्ट लोकर फोटोटा से पाखे रखिले, वो टंका को से काउंटरफिट करिछि ताकू भी पाखे रखिले. So on the basis of these two evidences, outright and red-handed, he should be arrested and he should be caught. That was ordered by his highest officer. तांको highest authority कहले जे एई भलिया नोट एई भलिया कोन तांकर फेस थिबो सेई लोक को तुमे धरि. He became thoughtful. Chicago, 1,000 miles away. What chance? Then he said to himself aloud, "Never mind, my boy. You have been a dutiful on one these last 18 years, and luck owes you a debt." So like what happened? Then the policeman, after looking at photograph, so whatever the photos, it was like handed over to the police. He saw the photo and he was having the kind of doubt. Perhaps this man had gone to Chicago, and that too, the Chicago is very far from that particular town. Watson, then he said to himself aloud, that policeman, while on his duty, he was speaking to himself like, "Never mind, my boy, you have been dutiful one these last 18 years, and luck owes you a debt." So he was speaking to himself, I am now at present on duty, and I have been continuing this duty since last 18 years. So luck owes me. Luck owes me means that policeman do possesses lot of practical experience, how to locate, how to like catch the criminal red-handed with proper evidence. So he was possessing 18 years experience. So that is why that policeman was talking to himself. This photograph, it belongs to a person to whom he knows, and that person is in Chicago. से पहले से जो काउंटरफिट नोटा जे करिसंती से चिकागो रे अछंती आ तार सहित से कोन देखिले जे 18 इयर्स रो तांकर क्राइम एक्सपीरियंस अछि. जो माने को जेते एक्सपीरियंस थिबो पुलिस डिपार्टमेंट रे, सो डेफिनेटली दे विल बी द. सो दैट इज व्हाई he was speaking to himself. से निजु को कहउतिले जेमति देखिबो तुमे माने जेतबे तुमे रिजल्ट सब बाहरे तुमर केते मैट्रिक रिजल्ट भाइला तुमे भाउछो मोर मार्क्स के काहे कमिला, कोन होला, कोटे कमिला, काहे कमिला, ओ देह खराब होला कमे. सो दैट मींस यू टॉक टू योरसेल्फ एमति कोना नै सेमति द policeman was speaking to himself like to catch this crime, it is very difficult, but already the evidence are being supplied to the policeman by his senior authority. So that is why he thought, being an experienced policeman having 18 years experience, perhaps I will be the right person to catch him red-handed even at the acute position. से कहले जे मु आजि पर्यंत एटी 18 वर्ष हला मोर एक्सपीरियंस अछि, तने 18 वर्ष रे आई हैव गॉट दैट काइंड ऑफ स्किल टू कैच द क्रिमिनल्स. से कहले 18 वर्ष रे से जो एक्सपीरियंस तांग पाखर अछि गोटे क्रिमिनल को धरिबा को, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट. सो दैट इज व्हाई ही वाज स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, बाय हुक और क्रुक आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हैंड इट ओवर टू the most notorious criminal who has counterfeited the note. So last रे डिसाइड करले जेहेतु मोर 18 वर्ष रे एक्सपीरियंस अछि, मो पाखरे बहुत स्किल अछि, तणु जेमिति हेले मु ताको कोन करिवि धरिवि. तुमे देखिथिबो एबे जत्ते बड़ सो क्राइम होछि, ओ क्राइम वर्तमान हिडन रहउछि, समस्त धरा पड़छन. वर्तमान हिट टॉपिक रे कोन अछि, हमर हिट न्यूज कोन अछि क्राइम रे,
श्रद्धा मर्डर केस सुनिथिबो श्रद्धा दिल्ली रे आफ्ताब और श्रद्धा से लव रु तांकर मर्डर करी ताको फ्रिज रे पुरेथिला स्टिल ही वाज कट हला तापर देखो he was in the habit of talking to himself sometimes when nobody was by and he liked to refer to himself as a boy though he was happy. So like here O. Henry has explained that policeman he was his imagination he was thinking he is a mere boy but he was 40 so that means he was consoling himself like whatever the duty have been assigned to you and he was speaking to himself एठी हम दीटा लोक नब से कहूची ता आत्मा से पुलिसमैन का ता आत्मा को कहूची जे एई गोटे क्राइम तू ताको धरि परबो 18 वर्ष रे एक्सपीरियंस लाणी तणो वरी हबार किछि दरकार नाही तू you have got lot of skills so at this particular juncture red handed like you try to catch him then se nijuku se kahut and very often he speak to himself तुम देखिबो हमर प्राय दीटा कैटेगरी लोक से निज सहित कथा बन के कहले देखिया दी प्रकार लोक अछंती से निज सहित कथा वेरी गुड पागल हैला से तार कथा कथि को चलतो बेले स्पीच करतो बेले कपड़ा मुदर लेके से कपड़ी चलतो सेटा गोटा होची टॉकिंग टू हिमसेल्फ आउ जणे जणे दोज आर टैलेंटेड पर्सन माने कर जणे कोठी कोठी जाउची सुट से डिसाइड कर से ना पूरी से टाइप रो पर्सन सो दैट पर्टिकुलर पुलिसमैन he was having एटा को हम इंग्लिश रे कहले ambiguous personality and dilemma जते बेले जणे कंफ्यूज हो जाय डिसीजन नै पारे ना so that is known as ambiguous personality and dilemma so this particular person like since he has been strictly ordered by his boss by hook or crook he has to catch the notorious criminal who has done the counterfeit note immediately and hand it over to the boss. There was another thing in his mind. He looked at his watch, a 10:15, 15 minutes more. It was long road, but there was enough time. After a minute, he described about 500 meters ahead the outline of a man near the doorway of a darkened hardware store. Then another thing, the time is already 10:15. But as per the law, his duty destination ends at 10:30. So now almost he is in the completion is due. It has already become 10:15. So that is why had it been other policeman or had it been other person, perhaps no person would have stayed honestly and sincerely on that chilly, cold and no spectacular night. माने आउ के जदि हे ठंडा एते ठंडा राती रास्ता रे केही नाहंती लोक थिले टिकेट लोक डरन माने कर देखियो ट्रैफिक पोस्ट देखियो जते बेले टिके क्राउडेड थिबो से हाथ देखो हला जते बेले क्राउडेड नथिबो से कोड पळे नै कि एटा होची हमर कलिजुग लोक मानकर ब्यूटीफुल नेचर सतना नै आध्य सतना नै सत्य ब्यूटीफुल नेचर हला तेनो एठी ओ हेनरी कहउचंती दिस पुलिसमैन एठी आने एडजेक्टिव लगेबा he was extra sincere he was extra exceptional man even though 15 minutes time it was left but still he was serious हमर कोन होय हमर ए जो काली जुग रे हमें जो सब माने दिव्य पुरुष सब अच्छे हमें कोन करछे स्पेशली मो कहूची
चारिटार जार छुट्टी होबार थो से 2टा बेलू प्लान करिवे बंधा बंधी तार करिवे माने जदि जेंट्स थे तार बंधा खाइबे तापर छुट्टी फुट्टी टिके कोना कोने करिकरी तापर सेंट फ्रेंड जे पके देके रेडी आ जदि ए झियंग बळी थेबे तांग तापर भ्यानिट तांगर साइज करी केते बेले अध घंटा घंटा पूर्व किंतु एठी ओ हेनरी कहउचंती दिस पर्टिकुलर पुलिसमैन ही वाज पायस पायस माने आमे जो पास खाउचे से पास न को पास पवित्र तांको मन थला पवित्र रिलीजियस बहुत धार्मिक थिले बहुत जुडिशियस बहुत न्यायिक थिले बहुत ऑनेस्ट थिले केही नथिले सुधा ही वाज हैवी हियर ऑफ गॉड हमर गोटे प्रोवर्ब अछि हियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम जे भगवान को डरिबो ता काम ऑटोमेटिकली स्मूथली रन कर किंतु हमर ए कली जुग रे सेंटिया लोक हजार रु केते जन बाहरी जे पूरा कंप्लीटली ऑनेस्ट हजार हां केते अनुमान कल हां सही हार्डली जने ना मोर होउनी बा सुन काहे के होउनी अच्छा काहे के होउनी सुन मु आज फर्स्ट टाइम तुम क्लास नेली क्लास नेला पने तुमे मो विषय किछि ना किछि जानि परथो कोन जाने गोटे रागी लोक ना एक्सपीरियंस अछि केते अछि से झ आ अंशुमान मते चिन्हिसन हला काहे कहला तमाने मो क्लास करिसन तनु जेहेतु मो एक्सपीरियंस लोक मोर पर्सनालिटी ए भरी तनु सेहि पय मोर एक्सपीरियंस अछि ये कॉली जुग रे हमर केते ऑनेस्ट लोक अछि and still it was almost in third of backward completion of his time it has already become 10:15 but still his inquisitiveness his interest in checking the doors checking the shops checking the windows he was still extra serious काहे कि ना प्राय लोक मानक मन रे थाए जे मोरता 15 मिनिट रहला why should I do my duty किंतु एठी पुलिस मान का जो whatever the honesty personality he has got perhaps it is one of the highly exceptional personality only there are very selected few people that do possess this type of character बहुत कम लोक मान पाखरे ए भली ए कली जुग रे से बिया जिनिस अछि तुमे जोठी के जाओ ना सब ठक लोक भारी नहीं किंतु तुमको सिखा जाउची तुमे जेहेतु प्लस 2 रे पढुछ पुणे होछ तुमे देशर होछ खाली नागरिक न सु नागरिक सु काहे कहले कहलो तुमे के रेभेन्सा थबो के जेके भी के थबो खाली रे देखो आउरी पुणी सु नाही सु नागरिक दीटा सु लागिला अरे सुसु माने एको न माने तुमे केते भलो नाही रियली आई डू रेस्पेक्ट रेवेन्सा पिला तो रेस्पेक्ट काहे कि रेवेन्सा पिला माने बहुत टैलेंटेड तुम माने भीतर सेति के टैलेंट थिला बोली भगवान एठी तुमको बसई छन तुमे माने होछ गोटे गोटे ज्वेल काहे ना रेवेन्सा रु पास कला परा नो वन इज भलो भलो क्वेश्चन अछि तो तुम पाए जो चैप्टर टा पढ़ा हला कीपिंग इन द काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन रखिसंती यू ट्राई टू बी ऑनेस्ट सिंसियर तुमे माने हबा किंतु तथापि एई बही पढिला परे तुमे माने एई जो बहुत अंशुमान very studious very disciplined तेणु तुम्हें मान को एई चारटा पढ़ा होची एजुकेशन एबे भी नोच he quickened his steps the place was slightly dark laying exactly midway between two lampposts
So like what happened on that particular night when the policeman was on duty, he observed a door is about to close. About to कोट लगेगा मन कर एटा डोर टा जने एमटी बंद करिया को नउची बंद हेइनी बंद करिया नउची सेट बसो अबाउट टू क्लोज आ एटा भलो इंग्लिश आन लगे पारिबो इन वर्ज ऑफ क्लोजिंग जदी बंद हे गला सेटा क्लोज हे गला पास्ट टेंस पळे गला कि बंद हब विल बी क्लोज किंतु एटी अबाउट टू क्लोज and the policeman quickened his steps to locate that counterfeited notorious criminal if possible red hand से जेतेबेले देखिले से जणे लोक से गोटे तांकर डोर बंद करे जाइछन्ती ये जल्दी जल्दी चली माने सीरियस हो गेले जे whether the person which most wanted and he was having that necessity and acute interest to catch him up and to hand it over to his authority and तांको माइंड रे थिला जेमिति हेले मु से क्रिमिनल को धरिग्री मोर ऑफिसर को हैंड ओवर करी ता माने तुम एउठु सिखो से केते ऑनेस्ट तुम भीतर सेंटर के ना के किछि थिबे मु तो क्लोजली मिसले ए जो सेकंड ईयर जे सो पढुतले तुम सीनियर बैच मो पाखे पढ़ुचंदी बहुत पिला से पढ़ते एजुकेशन पढ़ बहुत भलो पिला बहुत एबे ए क्लास पर से बसिए से जियो बोले 7-8 जण बहुत ऑनेस्ट तांकर तले एग्जाम हुए 50 रु 50 49 50 49 ता माने एठी ओ हिंदी कहउछंती ए जो ऑनेस्टी and with prestigious life dignified life has to be maintained to maintain the personality जने निजर व्यक्तित्व रखिबा हेले ता पर्सनालिटी मेंटेन करियो पुनी तुमे होच कोन हम देशर सुदीटा सुला देख हला काहे कि रेवेन्सा रे पढछ माने बहुत भलो पिला तुम सब बेले ऑनेस्टीटा मेंटेन करियो अच्छा रेवेन्सा छाडी के आउ को कॉलेज ना आउ सपोर्ट के बिके ताहले मु सत्य कथाडा कहू माने कहि न थांदी काली आ गोटे जगह रे पढौतली तो सेठी अलगा कॉलेज रे किछ थिले जे थले पुत फड मु जते बेले पढौची से दी जण झियो साडे मन कर सेट क्लास रहउची हला से को कॉलेज कहि देनी नहीं गोटे कॉलेज रे अछि कॉलेज पर्सनालिटी मार्क तार गोटे पर्सनालिटी अछि हला कि he was about to address the man but changed his mind and allowed the man to begin so like this the person who was about to close the door he wanted to inquire about his identity but he was extra clever and he insisted let the person start his identification so that it will be his intelligent way of catching माने से चाहिले से लोकन को जाय पचारी माने करो जे चोरी करथो आने ता पचारे क्या अपन चोरी करछंती से कहिबे हला तेनो वेट पाई के कोन कले प्राय पुलिस लोक माने बहुत experience जो माने एक्स्ट्रा टैलेंट ओनली क्रिमिनल ये कले instead of asking he insisted upon आ जो माने एक्सपीरियंस क्रिमिनल अछि माने एक्सपीरियंस ए जो साधा मर्डर जे करछन केते एक्सपीरियंस कथा भी सारा पढ़ चलेनी हला के जो श्रद्धा को जे मर्डर करथिले मुंबई रे मर्डर कले कारे धरा परिबो
दिल्ली की नहीं गले दिल्ली की सेठी मर्डर कला परे 3-4टा छुरी रे काटी फ्रिज रे पले से जो ब्लड स्टेन थिला बटे सोडियम हाइपोक्लोराइड दे सफा कर देले आ जणा पड़िबो सेटा हला एक्स्ट्रा तापरे जेतेबेले श्रद्धा कथा मने पड़े श्रद्धारे से मुंडटा को देखन कटा मुंडटा श्रद्धा मुंड को से रखिथिले जरी जेड मने पड़े टिके देखि दे हला ता सहित पुलिस हम जेतेबेले पचारला ए हैज कन्फेस्ड the man realized that the way he was standing there must look suspicious to one who did not know his story. So that means the stranger who was standing near the door was about to close and he was looking suspicious. मानेकर गोटे जनरल लुक अछि आ गोटे सस्पिशियस लुक अछि आमे जानि परमानी धर मु बर्तमान एम छिड़ा अछि एटा हला जनरल लुक सस्पिशियस लुक माने एटा सस्पिशियस माने तने से पुलिस मैन मो एक्सपीरियंस लोक तो बहुत एक्सपीरियंस अछि तनो से लोकटा कोन कले दैट पुलिस मैन सस्पेक्टेड हिम because his gesture माने तांकर आउटसाइड अपीयरेंस हला माने कर जो माने क्रिमिनल थे से एमती अपसेट रहे एटा भी पुलिस धरे नै जिवे ए जो आफ्ताब रो पॉलीग्राफ टेस्ट हला पॉलीग्राफ टेस्ट जानछ पॉलीग्राफ क्वेश्चन माने कर जणे मर्डर करिछि सत्य मान सत्य न मानिले हमर गोटे अछि सोडियम हाइपोक्लोराइड सेटा को इंजेक्शन दिया दे इंजेक्शन देले से जो ब्रेन जोटा मिछ कुहे से आउ काम करिवे सत्य सब पाइ दो हला साइंस से क्वाड पहुंचला से सब सत्य कहि दो हला काली गोटे पॉलीग्राफ हेतला आज के गोटे हेची हमरो जे बॉम्बे ताज हॉस्टल रे जे बम ब्लास्ट करथला हां सुना बॉम्बे रो ताज होटल रे जे बम ब्लास्ट करिथिला ता ना होची कशफ अजमल खान 19 वर्षर पिलाटी से कोन कला ताकू सर साडे जानतो ने मु बेको प्ले करन मरो कब हला ताकू कोन कले क्रिमिनल माने ताकू देथिले 20 लाख काहे के देथिले जे तुमे ए 20 लाख देके तांको 10-15 जन को पठेथिले तुमे जाय बम ब्लास्ट करी से आसले होटल ताज जोटा कि हाई फाई अरिस्टोक्रेटिक होटल से होटल को बम ब्लास्ट करेले near about 258 persons were like dead on that spot तापरे ताकू धरा हला ताकू एत धरा हला से कोन कला कि केप्ट ऑन लाइन मिछो कहि चलला तापरे ए टेस्ट करा एम द स्वाई देबे तापरे स्वाई देबे से इंजेक्शन ता दे देबे मुंडटा एम तो ऊपर को रहबो तापरे ताको क्वेश्चन करे सब सत्य बाहर पड़ी आउ गोटे सत्य बाहरिया पे आउ गोटे ट्रिक अछि आउ गोटे कोन कहलो जनरल ट्रिक सेटा किछि मिछता भीतर भी कहि दो जो माने एक्सपीरियंस आ गोटे होची मद पेय हला मद पी देले तुमने के पेना के ना छ अरे मद पी छ तो हला पी छ घरे के आर्मी रे के थिबे पापा के हां मद जदी पी दबा सुना तुम्हें चाहूथिबो जन को मारिबा पे तुम्हें मद पी देले सेटा कहि दो सत्य कथा कहू तन सेटा भी गोटे टेस्ट so he said and the policeman walked up to him it's all right officer I'm just waiting for a friend it is an appointment made 20 years ago suna pila so that person who was waiting near the door he was under suspicion and he was under suspicion so he told like let him be not doubted he is waiting for his nearest and dearest friend
which appointment was done 20 years back. से पहले जे हम दुई सांग को मध्य 20 वर्ष तळे गोटे एग्रीमेंट होइथिला आमे 20 वर्ष पळे भेट हबो जोति पई मु आज अपेक्षा करिछि एटी शेष कर दबा नै आपर तुमर गोटे क्लास हो ए बुक का कारण मोर It's a door,